Hello guys, welcome back to my channel. Just done with drafting a plan for tomorrow's ride. It's going to be a one-day ride within 100 kilometers and we're gonna make most use of that. We'll be covering four places around Bangalore within 100-kilometer radius, and it's going to start from morning 3 a.m. to 7 p.m. schedule and four places. Here is how it's gonna day look like. First, we'll be starting with Nandi Hills from 3:30 a.m. It will take around 2 hours, so even if we take a half an hour as a buffer, we would be there by 6 o'clock. Right? Once we are done with the Nandi Hills by 9 a.m., once we are done with the sunrise, we'll be heading towards Boga Nandeeshwara temple, which is in the village of Nandi. That's one of the historic 9th century temple which I would be, very interested to go. Once after the darshan, we'll be heading towards the Gudi Bande fort, which is almost 20 kilometers from Nandi village, where we'll be reaching by 12 o'clock approximately. 12 to 1 o'clock would be the range we would be targeting towards. It's one of the 17th century Vijayanagar Samraja fort, which is mostly ruins, but it's okay. We'll uncover something. Like being a historian, I would like to take a look at that. Next place would be the Adiyogi statue. We would be reaching there by 5 p.m. Again, you have to take a detour towards the Bangalore, approximately 10 to 15 kilometers once again, but it's going to be a good detour again. Once we go to that Adiyogi statue, 7 o'clock, we have a laser show if there is no rain. Provide the case that there is no rain. Once we are done with the Adiyogi, by 7 to 8 p.m., we'll be starting back to Bangalore. This is going to be the overall plan. It's going to be 100 kilometers up and 100 kilometers down. Along with that, we'll be keeping as a 20 kilometers buffer kilometer to make sure that, even if there is a more commute, right, like returning back and all, it would be covered up. So this is the itinerary for tomorrow. Let's see you tomorrow on the ride. So the morning has been started and we are already in the white fit. So according to that, we are on schedule. That's the way to run this. यहाँ से जो है 8 किलोमीटर घाट जैसे जो ऊपर जाते हैं ना, वो वाली सीन है. Take a look at this guys. मेरा एक्साइटमेंट लेवल हमेशा अप रहता है इस लोकेशन के लिए. कुछ भी नहीं दिखता. कभी फोर्ट हुआ करता था क्वेश्चन मार्क. वी आर इनसाइड नंदी हिल्स नाउ. ओहो भाई 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 भाई, आज तो थर्सडे है, इट्स अ वीकडे. दिस इडली वड़ा एंड द वेदर, मज़ा ही कुछ और है यार, मज़ा ही कुछ और है. इट्स वेरी टेस्टी, लुक्स लाइक दैट बट वेरी टेस्टी. ही चार्ज मी अराउंड 60 फॉर दिस. दिस टेम्पल इज़ ऑन टॉप ऑफ नंदी हिल्स इटसेल्फ. मयूरा से जो थोड़ा लेफ्ट लेंगे तो ये योगा नंदीश्वरा टेम्पल है. दिस वेरी ओल्ड, अगेन इट स्टेज बैक टू 9th century. So these are the stone carvings which are almost old but they are timeless anyway. अभी अंदर एक्सप्लोर करते हैं. If I find something interesting, very interesting, I'll just come back. Finally made it to Tipu's drop point. अभी थोड़ा धूप आई है तो no clouds.
फॉग सो पूरा दिखेगा अभी, दैट्स द बेस्ट पार्ट। देखो दिस इज द टिप्पू ड्रॉप पॉइंट, जहाँ पे 650 मीटर्स का ड्रॉप होता था, जो कि टिप्पू जो है ड्रॉप करता था जो भी क्रिमिनल्स होता था या तो। डन विद नंदी हिल्स, नाउ वी आर हेडिंग टू नंदीश्वरा टेम्पल विच इज़ इन नंदी विलेज। आफ्टर दैट विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द फोर्ट। प्रॉब्ली फोर्ट के लिए यार कुछ ज़्यादा थक चुके हैं। लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी, क्योंकि यहाँ पे बहुत चढ़ना पड़ेगा ट्रेकर्स। दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेस फॉर यू। एंड आफ्टर दैट आदियोगी में भी घूमना पड़ेगा, थोड़ी बहुत ऑफ राइडिंग होगी वहाँ पे, क्योंकि अभी रोड्स रेडी नहीं है। होपफुली इट डजंट रेन सो दैट वी कैन सी द लेजर शो एज वेल। दिस इज़ कम्प्लीटली अ फोर्ट, मतलब हर जगह एक पूरा फोर्ट है, उस पर हम लोग टूरिस्ट प्लेस बना दिए। रोड्स आर अमेजिंग, वेरी फेमस फॉर राइडर्स एंड ऑल। यहाँ पे इतने लोग गिरे कि यहाँ पे देखो ऐसे घिस गया रोड पूरा। अभी जो राइट पे दिख रहा है ना, वो भोगा नंदीश्वरा टेम्पल है। दिस इज़ 9th सेंचुरी टेम्पल, जो मैं बता रहा था, प्रिटी ओल्ड। लेट्स सी, आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा दिखा मुझे फोटोज़ में, तो मैं सोचा कि 9th सेंचुरी टेम्पल विच इज मोस्टली रूइंस, और यहाँ पे पूरे निकाल के रखे हैं, तो गिर गया है या निकाल दिए बिकॉज ऑफ दिस। एनीवे आई एम स्टार्टिंग बिलो दैट। अभी अंदर जाएंगे, एक्चुअल टेम्पल तो वहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो तो आएगा, फोटोग्राफी नॉट अलाउड, पता नहीं क्यों ऐसे क्या है भाई। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो विल रिस्पेक्ट बीइंग अ टूरिस्ट, तो हम लोग नहीं करेंगे अंदर। बट इट्स लुक्स लाइक अ वंडरफुल प्लेस फ्रॉम आउटसाइड। So this is the location, entrance. It's huge. 3 किलोमीटर के लिए यार 20 मिनट बता रहा है गूगल मैप्स, तो मुझे लग रहा है कि यार व्यू के साथ साथ पूरा रोड का भी हम लोग मतलब सामना करना पड़ेगा। शायद रोड इसलिए पूरा है क्योंकि ताकि अच्छी व्यू देख पाओ तुम लोग, आराम से जाओ, वरना फटाक बोल के निकाल देते ना तुम लोग। यू कैन सी बिहाइंड द माउंटेन्स, दैट्स आदियोगी स्टैचू। आदियोगी स्टैचू कहाँ से, मतलब क्या नाम, कैसा है शिवा का नाम, सब मैं बताऊँगा वहाँ जाके। These are the mountains around. It's very scenic though. Just if you ignore the roads, of course. I know I complained it already 100 times. Just have to pay 20 rupees as a parking ticket अभी के लिए तो। I don't think अंदर के टिकट है। Let's take a look. At the starting point, you will touch the snake, otherwise you say Nagarahavu. Then you will be entering the actual Adiyogi temple.
8,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown.